हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलता बैच क्लास 72। सो आज हमारी 72nd क्लास है। इससे पहले की सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा डेली हम 2 मैटर्स लिख रहे हैं जो कि आपको स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। डेली हम 2 मैटर्स लिख रहे हैं और अभी जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी तो हम इन 2 मैटर्स को 4 मैटर्स कर देंगे, जिसमें 2 लीगल लिखेंगे, एक एडिटोरियल लिखेंगे और एक जनरल लिखेंगे, जिससे ओवरऑल सारे मैटर्स के टाइप ऑफ मैटर्स की प्रिपरेशन आपकी होती रहे। आज हम लोग इस क्लास के अंदर एक लीगल मैटर लिखने वाले हैं। ये क्लास वीकली 2 दिन चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पर आप इसको ले सकते हो। इसके बाद में इसको आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो अपने नोटपैड में। इसके अलावा ये क्लास जो है स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर भी मिलेगी, मतलब ये डिक्टेशन आप वहाँ पर भी देखोगे। इसको वहाँ पे आप ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपको आपकी गलतियों की मिस्टेक्स जो आती हैं वो आपको वहीं पर दिख जाएंगी कि आपने क्या मिस्टेक करी है, कौन सा कॉमा छोड़ दिया है, कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक करी है। तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। उसको अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। अभी हम एक लीगल मैटर लिखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1, start. The jurisprudential controversy regarding the validity and effect of the triple divorce formula apart, it remains a fact that a predominant majority of Muslims in the country have known it as the only Islamic process of divorce. Stop. In a study, it was found that the majority of the women respondents were not aware of the true Quran provisions relating to talaq and the common form of divorce prevalent among the community was talaq e bidat. Stop. In yet another study conducted among 300 Muslim women, 150 each from Delhi and Lucknow, none of the respondents had knowledge about the true practice in Sharia for talaq. Stop. They all believed that the divorce is final and irrevocable by the pronouncement of the word talaq thrice in one breath. Stop. Para. In the present empirical study, the respondents' level of knowledge and awareness about the rules and regulations of talaq as laid down in and traditions of the Prophet was ascertained. Stop. Majority of the divorced men and women possessed no knowledge about the correct law of divorce. Stop. Very few women were familiar with the true Muslim law and procedure of divorce. Stop. Only 8.5% women were aware that under true Sharia law, the pronouncement of talaq must be preceded by reasonable cause. Only 15% alone were aware that under true Sharia law, the pronouncement of talaq must be preceded by an attempt of reconciliation. Para. However, the majority of the respondents of the third and fourth groups were not aware of the same. Stop. Only 26.5% divorced men were aware that under true Sharia law, the pronouncement of talaq must be preceded by reasonable cause, and 29% of them were aware that it must be preceded by an attempt of reconciliation. Stop. The finding further reveals that 84% of the divorced women and 72.5% the divorced men were unaware of the most laudable pattern of divorce. Stop. However, 55% of the third group and 85% of the fourth group communicated their awareness of the practice of triple talaq being contrary to the provisions of the Quran. Stop. Only 8% and 5% respectively expressed their ignorance. Stop. The above findings indicate that common Muslims did not have clear knowledge about the correct law on divorce, while the majority of the elite and educated class as well as the clerics have clear knowledge about it. Para. This takes me to the question why the state is so hesitant to reform. Stop.
it appears from public debate that resistance is from a small section on the ground that Sharia is immutable and any interference would amount to negation of freedom of religion guaranteed under the Constitution. Stop. I find this dilemma is based on the conjecture of repugnancy of divine law and secular law. Stop. The state also appears as reluctant on an assumption that reforms of religious practice would offend religious freedom guaranteed under the Constitution of India. Stop. This leads me to discuss facets of Islamic law. Stop. I also find it equally important to discuss the reforms of personal law relating to triple talaq within the constitutional polity, as the ultimate value of its legality has to be tested under the freedom of religious practices. Stop. This, however, begs the whole question whether personal law is a law within the meaning of Article 13 of the Constitution, and can it be subjected to intervention of the state. Stop. So, ये हमने एक लीगल मैटर लिखा है ट्रिपल तलाक के ऊपर। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स आई हैं, तो अगर आपसे वो छूट रही हैं तो उनको छोड़ने में आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डिजिट्स आ जाएं एग्ज़ाम के मैटर के अंदर तो उसको आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी जो मैटर है उसको अच्छे से लिख सकते हो, तो उसको कंप्लीट करिए। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अब आप इसको ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर विजिट करके अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है उसको खरीद लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 1 से 1.5 महीने में हो जाएगा, तो आपका वो 1-1.5 महीने तक वो सब्सक्रिप्शन चल जाएगा। मतलब 1 महीने तक आपको उसके अंदर सारे डिक्टेशंस मिल जाएंगे और पहले के जितने भी डिक्टेशंस हो रखे हैं वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे। 999 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है। उसके अलावा जितने भी बैचेज होंगे, अगर आपने पीए का एग्ज़ाम भी दे रखा है तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। अभी हम एक ही वीक के अंदर पीए के एग्ज़ाम के लिए भी बैच लॉन्च करेंगे, उसके अंदर पीए की प्रिपरेशन करवाएंगे जिसमें 100 की स्पीड मांगी गई है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, या पर्सनली टेलीग्राम आईडी भी मेंशन कर रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।